Hello everyone, welcome to Literature Window on my YouTube channel. And once again, I'm back here with your chapter Making of a Scientist, Part 2. Okay, so let's move ahead with the chapter. Last video, okay, I have given you the introduction about the chapter and we have proceeded with the text also. So this time we will go ahead with the same text. चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. एंड ये आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड दिस पार्ट completely and then we have to go for this part, and in this part also we have dealt it till this place. We have done it, this was done. Okay, now we have to do the next part after here. See, till here we have studied that Richard E. Bright, he got his article published in national level magazine, that was Proceedings of you can see here, that was the here Proceedings of National Academy of Science. Okay, in that he got his article published, which was written by he and himself together. Now that Richard E. Bright, who was a versatile student, who had a lot of skills since his childhood, and Richard E. Bright, who was supported by his mother. Now let us see what the chapter says about him later. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things. Okay, his mother said he wanted to learn it. Till here we studied. यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, and I taught you also that Richard E. Bright, his mother, they spent every evening together at the dining table. Now next, moving ahead, we have and learn he did. He earned top grades in school. You can see here that Richard E. Bright was not only collecting butterfly rocks and fossils. This man was also getting top grades in school. If you see his face, you can't believe. आप उनका चेहरा देखेंगे तो लगेगा बहुत ही नॉर्मल टाइप के सिंपल बच्चे रहे होंगे, लेकिन he was really a genius student. He earned top grades in the school. On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. लेकिन other than school life and study, okay, rest of the thing was normal. Sometimes it happens कि somebody who gets top grade, he has got attitude, he has got a different nature. तो Richard E. Bright did not have anything like that. उनके साथ कुछ ऐसा नहीं था. He earned top grades, but he was living a normal life. This is an account put by his mother. By the time he was in second grade, E. Bright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. You can see here, this is what tells that Richard E. Bright's collection was something passionate, and he was this much passionate कि by the time he reached in second grade, means जब तक वो दूसरे क्लास में आए, Richard E. Bright had collected all 25 species of butterfly. उस जगह में इनको होम टाउन में पाए जाने वाले सब तरह के बटरफ्लाई को जमा करके उसका सैंपल रख करके, एंड ही कलेक्टेड फोटोज, एंड देन फाइनली ही गॉट टू नो दैट इन माय होम टाउन देयर आर ओनली 25 बटरफ्लाइज आर देयर. ओके, so you can see the box here given. This box gives you an account of the butterflies. So through this box you can get to know that these many butterflies are there, means types of butterfly that were found in his hometown Pennsylvania. The place name is Reading. You can see species and subspecies of butterfly collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. Gossamer winged butterfly, means lot of butterflies are there. You should read it once, and one or two pictures like monarch I have shown you. Okay, monarch you can see here, still I have here in the chapter. When I started, this is called milkweed. Okay, right, then we have got this one is monarch. Okay, monarch, milkweed, almost it looks the same. So this is what we have in that list. You will find, if you check on internet, you will get all the butterflies name detail. Let's move ahead. Okay, that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch Tenth. That book, which told how monarch butterfly migrate to Central America,
opened the world of science to the eager young collector. See, this eager young collector became a scientist, okay, because of his mother, and the second helper was nothing but a children's book, and the children's book name was Travels of Monarch Tenth. You should know this. Monarch Tenth is written here mainly for the butterfly, okay, monarch butterfly. So this book was given to him because there came a time when, एक समय ऐसा भी आया जब रिचर्ड ई ब्राइट thought that now I have got nothing to do. I have collected all 25 species of butterflies. What should I do now? Then his mother provided him a book. The book name was Travels of Monarch Tenth, and that book which told how monarch butterfly migrate to Central America. And that book really had an account of migration of Monarch Tenth butterfly. उस किताब में मोनार्क टेंथ बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में लिखा हुआ था कि वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे आते हैं, हाउ दे कम टू सेंट्रल अमेरिका, ओके. एंड दिस इज द बुक, ओके, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेयर of Richard E. Bright in becoming a scientist. Let's move ahead. We have, at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. Richard E. Bright read the book. Now at the end of the book, किताब के आखिरी में there was one request was given that if you are reading the book, please help to study the butterfly migration. किताब के आखिरी में एक रिक्वेस्ट लिखा गया था कि अगर आपकी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा से बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को, एक जगह से दूसरी जगह जाने के सारे कारणों को स्टडी करने में हेल्प करें. एंड आई टेल यू द बुक वाज मेनली रिटन बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहट, एंड दिस पर्सन हैड गिवन दिस रिक्वेस्ट. इसी आदमी ने ये रिक्वेस्ट दिया था. करना क्या था? व्हाट दे हैड टू डू? दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. उन्हें करना क्या था कि उन्हें बटरफ्लाई पकड़ना था. दे हैड टू कैच द बटरफ्लाई. एक छोटा सा टैग लगाना था. किस बात को लिख करके? बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहट, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कैनेडा. ये पूरा ये लाइन लिख करके तितलियों पे, बटरफ्लाई पे चिपकाना होता था और तब उसे, इतना करने के बाद उसे हवा में छोड़ देना था. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarch. And soon what happened? This boy Richard E. Bright got busy in doing that. ये बहुत ही जल्दी व्यस्त हो गए. क्या करने के लिए? तितलियां पकड़ना है, उसमें टैग लगाना है, उसे छोड़ना है. And then he was waiting कि when can I get some result of this. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Urquhart. और किसी को भी वो टैग लगा हुआ बटरफ्लाई कहीं भी मिलता, ओके, तो उसको जो है एक जगह से दूसरे जगह मीन्स डॉक्टर अर्कहट के पास पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था. ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बटरफ्लाई को सपोज समबडी हैज़ लेफ्ट एट अ सर्टन पॉइंट, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे जाएगा ही, मे बी 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर. उसके बाद जिस व्यक्ति के पकड़ में आया, तो दैट पर्सन विल पोस्ट द बटरफ्लाई टू डॉक्टर अर्कहट. क्लियर. और वहाँ जाने के बाद वो डिसाइड किया जाएगा कि ये बटरफ्लाई जो है कितने डिस्टेंस तक उड़ा. यू विल गेट टू नो हाउ लॉन्ग अ बटरफ्लाई कैन गो. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. You can understand this. Okay, butterfly cannot be collected every month. Okay, butterfly collecting season around reading at that place, okay, it was only for 6 weeks, means in that 6 week only you can collect butterfly. That was also in late summer. You can see means as long as the crops in the field are totally green, you will find butterflies. Okay, the moment they start turning yellow, you will hardly get butterflies because they have nothing to eat. They eat generally leaves, so that's why this was only limited to 6 weeks only. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. Now there was one more problem. You have got 6 weeks only, and if you are going to catch them one by one, एक एक करके तितलियाँ पकड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, it will take lot of time. अब इंडिया वाले के जैसा नहीं होते कि इंडिया में बच्चों को तितली पकड़ना होता है तो वो किसी भी झाड़ को उखाड़ लेते हैं ज़मीन से और उसके बाद जड़ की ओर से पकड़ लेते हैं, एंड देन दे विल बी हिटिंग द बटरफ्लाई.
वो बटरफ्लाई को हवा में उड़ते हुए वो मार देते हैं, नीचे गिरने के बाद उसे उठा लेते हैं। तो डॉक्टर ये दिस रिचर्ड ई ब्राइट हैड नॉट टू किल द बटरफ्लाई, इसे बटरफ्लाई को जान से नहीं मारना था, इसे पकड़ना था और पकड़ने के बाद टैग लगा के उड़ने के लायक छोड़ना था। तो ये काम थोड़ा मुश्किल था। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो ये रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना दिमाग लगा दिया। किस बात के लिए दिमाग लगा दिया? कि इन्होंने अपने ही बेसमेंट में ही स्टार्टेड रेजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। कह सकते कि अपने बेसमेंट में इन्होंने तितलियों की खेती करना शुरू कर दिया। ओके, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, एक फीमेल मोनार्क पकड़ लेता, टेक हर टू एग्स, ओके, और घर में अंडे जमा कर लिया था, वहाँ ले जाता एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल के तहत क्या करता, उसे अपने ही बेसमेंट में तहखाने में उसे बड़ा करने लगा। फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड अडल्ट बटरफ्लाई। ये पूरे 4 स्टेज में इन्होंने बटरफ्लाई उगाना अपने घर में शुरू कर दिया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और इसके लिए अब आसान हो गया था, खेतों में दौड़ दौड़ के बटरफ्लाई पकड़ने से अच्छा था घर की खेती है, तितलियाँ पकड़ो, उसे उड़ाओ। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सी फॉर मैनी ईयर्स his house became a shelter home for monarch, or you can say a kind of farmhouse for monarch butterflies. उनके घर में हजारों monarch butterfly जो है कई सालों तक वहाँ रहते हुए पाया गया। Okay, so here we have a number and kinds of butterfly collected in 6 weeks. He tried once collecting, but he got only this result. So he started growing in his own house. Let's move ahead. We have eventually I began to lose interest in tagging butterfly. Now this putting tag on butterfly continued, but there was one problem. एक समस्या क्या था कि Richard E. Bright was working hard. Okay, he was catching butterfly, putting tag, letting them in air. Okay, लेकिन कहीं से रिजल्ट वापस आए तब तो आदमी का इंटरेस्ट जगा रहे। दैट इज़ कॉल्ड, सी कोई आदमी किसी ऑफिस में काम करता है तो जब तक पैसा है तब तक इंटरेस्ट है। इन द सेम वे आप कहीं भी जाते हैं, यू स्टडी इन योर स्कूल, यू अपीयर इन द टेस्ट, तो जब तक टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तब तक आपका इंटरेस्ट है। जिस दिन से वो चीज़ें, टेस्ट बंद हो जाता है, मार्क्स कम हो जाता है, तो यू विल लूज़ योर इंटरेस्ट। सेम थिंग वॉज देयर दैट एवरी पर्सन वेट्स फॉर सम रिजल्ट। ई ब्राइट वॉज नॉट गेटिंग रिजल्ट, ई ब्राइट को रिजल्ट नहीं मिल रहा था। देन in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterfly had tagged were captured. Or finally what happened, he was not getting feedback, but there came once, okay, that 2 butterfly, means he left many, but only 2 were caught by people. Okay, and now he got to know that 2 butterfly, they were caught after 75 miles from where I live. Okay, from the place reading, he got 75 miles far, 2 butterflies. Okay, so now from this statement you can learn that a butterfly can travel 75 miles from a place. Okay, reading and find out. Now here comes a question session in the middle. What lesson does E. Bright learn when he does not win anything at the science fair? You will get to know next. What experiment and project does he then undertake? What are the qualities that go into a making of a scientist? This is the second part of the chapter that is going to finish with this only. Okay, this is what we have. Now from here you will find a turn. Okay, a complete change you will find in the chapter. By now you have seen the childhood of Richard H. E. Bright, but from here you will get to know the stairs that he started climbing. Okay, 7th grade, then 8th grade, then 9th class, okay, then 12th class, then graduation. He started collecting awards and winning prizes and taking part in science fairs. Okay, this is what you will get in from here. So let's go ahead. I will make it of 20 minutes so that it should not go in something 6-7 parts. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. When Richard E. Bright came to 7th grade, जब ये 7वें क्लास में आए, then he got to know that science is not what I have been doing since childhood.
there is something else. Okay, he participated in a fair, that was county science fair, but unfortunately he lost. लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ वो हार गए. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Obviously this will be sad for everyone कि 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक रेस में, सबको कुछ ना कुछ मिला और एक आदमी को नहीं मिला, तो ही विल बी स्ट्राइकन विद इन, उसको अंदर से बहुत चोट पहुंचेगा. दैट वॉज सेम विद रिचर्ड ई ब्राइट, बट ही डिड नॉट लूज हिज इंटरेस्ट. ही टारगेटेड दैट नो आई विल डू समथिंग दैट आई शुड ऑल्सो बी गिवन, आई शुड ऑल्सो बी ऑनर्ड. See here you can see Ebright said his entry was slides of frog tissue. अब ये हारने का कारण क्या था? तो Ebright had taken frog tissues, okay? फ्रॉग के टिश्यू को लेते गए थे जिसे माइक्रोस्कोप से देखना था, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments and not simply make neat display. अब इनको मालूम हुआ हारने के बाद क्या कि जितने वहाँ विनर थे, they all were showing some kind of experiment then and there. वहीं का वहीं वो एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट का क्या था कि ये घर से बना बनाया ले आए थे. तो ऑब्वियस सी बात है, somebody is showing you magic show, कोई आपको जादू दिखा रहा है, वो कहेगा कि सी आई कैन चेंज द कलर ऑफ द वाटर. अब आपने कहा कि दिखाओ, अब वो अपने बॉटल में भरे हुए वाटर को दिखा रहे कि सी दिस इज रेड बिकॉज आई हैव चेंज्ड इट, दिस इज मैजिक. तो नोबडी कैन बिलीव. somebody brings you a basket, कोई आपके सामने एक बास्केट लेके आए और कहे कि सी दिस बास्केट, ओके दिस बास्केट वाज नॉट empty, आई हैड अ बॉय इन दिस, इसमें एक लड़का था एंड द बॉय हैज़ वैनिस्ड. nobody will believe. Okay, you have to, people will take interest when you show things before their eyes. उनकी आंखों के सामने दिखाने पे ही लोगों को इंटरेस्ट होता है, नहीं तो इंटरेस्ट किसी को नहीं होता है. तो दैट वाज द मेन काउज. रिचर्ड ई ब्राइट वाज आस्क्ड टू present a real experiment. Now moving ahead, already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. Now Richard E. Bright had a competitive spirit that was coming out now. Okay, I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. Now he had to present a real experiment and he had only one subject. Okay, reason he used to collect butterfly, so he knew more about insect. Okay, he had nothing idea about some other thing, but he knew about insect and he has been working. उस पर वो बचपन से काम कर रहे थे, तो कीड़े मकोड़ों के बारे में उनको आइडिया अच्छा था. We move ahead, so he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions. इसलिए उन्होंने क्या किया, डॉक्टर आर्कहार्ट को लेटर लिखा, सजेशन मांगा. ही आस्क्ड फॉर सजेशन कि व्हाट शुड आई डू, मैं इसमें भाग लेने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करूं. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. एंड नाउ व्हाट हैपन, डॉक्टर आर्कहार्ट ने ही गेव हिम सजेशंस दैट यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, एंड द रिजल्ट केम दैट ही वर्कड ऑन द सजेशंस, ही गॉट हिमसेल्फ बिजी, एंड देन there started a series of prizes projects. Okay, in county, here you can see the international science fairs, one by one it kept coming. Now as I told you, you can see from here there started first winning for his 8th grade project. Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. This was second time when Richard E. Bright participated in a science fair, and this time he took another project. Okay, right? What was the project? To find out a disease, viral disease that kills nearly all the monarch caterpillar every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. सबसे पहले Ebright को लगा कि हो सकता है ये beetles के कारण ऐसा होता होगा. He tried raising caterpillars in the presence of beetle. अब उसने क्या किया कि beetles के सामने ही कैटरपिलर उगाने का काम किया. आई डेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन रिचर्ड ई ब्राइट डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ चेंज. ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन. लेकिन इन्होंने अपने उस फेयर में इन्होंने दिखाया कि आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट. ही प्रेजेंटेड इट एंड ही ऑल्सो प्रेजेंटेड दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बीटल्स ऑन कैटरपिलर्स, एंड फाइनली दिस वॉज हिज फर्स्ट विनिंग व्हेन ही वॉज इन 8th class. राइट, this time I won.
My dear students, after this you will find, okay, Richard E. Bright winning only prizes and awards, and sorry to say, but it will go perhaps in 2 more videos, okay, because the chapter is long, and as it is related to science, there are a lot of things to understand in this, right? So you will have to have patience, but it has to go, okay. If you need a proper explanation, then it will take little time. Till that, I would say thanks to all the people who are watching this video, and I would request you to share to people and to let others also learn from this platform and to do better. Till that, once again, thank you to all of you.